फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलग और एक यूनिक तरीके का वीडियो बनने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे लाइफ की मैं शेयर करने वाला हूँ। मैंने मेरी लाइफ की पहली कार खरीदी है। जी फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी उस कार को देख लिया है इंट्रो से पहले। अब वो कार है ऑल्टो। अब कई लोगों को ये सवाल उठता होगा कि ऑल्टो ही क्यों खरीदी मैंने। देखिए, मैंने कार लेने से एक बहुत अच्छा एक सबक सीखा है लाइफ का कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कि वो दूसरे क्या करते हैं या दूसरे क्या सोचते हैं। आपको हमेशा अपने लिए वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो आपके लिए सही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है। मेरी छोटी सी फैमिली है और इसलिए मुझे अभी बड़ी कार की ज़रूरत नहीं थी। प्लस मैंने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है, तो अगर मैं कोई महंगी कार लेता और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मेरे से चलाने में कोई गलती हो जाती तो इस सारी चीज़ों में मुझे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता। अब जब मैं ये कार खरीदने गया तो मुझे इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में थे, लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना कि मैं भी इसे चला सकता हूँ और मेरी वाइफ भी अभी सीख रही है तो वो भी इस कार को चला पाएगी। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मैंने कार तो खरीद ली, लेकिन आपको पता ही है कि मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ, तो सिंपल सी दिखने वाली कार को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। किस तरीके से मॉडिफाई किया है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरी कार का लुक अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं कार का मॉडिफिकेशन।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And